Okay, in the last class we have discussed few theorems and the examples. Today we have to continue with exercise 7.3. Okay, fine. Coming to question number 1. Do you have doubt in question number 1? क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है, किसको है? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट है AD इज़ एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC. We are given with an isosceles triangle ABC in which AD is an altitude. आप ये बताइए पहले मेरे को ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड इज नथिंग बट योर परपेंडिकुलर, राइट? AD क्या है? आपका एक ऑल्टीट्यूड है. इट मीन्स दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन. AD क्या है? परपेंडिकुलर है ऑन द बेस BC. नेक्स्ट आगे दिया हुआ है इन विच AB इज इक्वल्स टू AC. आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. सो हियर AB एंड AC बोथ आर equal. Show that in the first bit we have to prove that AD bisects BC. AD bisects BC means this line, this altitude AD is dividing base BC in two equal parts. So we have to prove that BD and CD both are equal. हमें यहाँ पे indirectly proof क्या करना है? BD is equals to CD. For that we have to consider two triangles. So from BD we can consider triangle ABD. And from CD we can consider triangle ACD. Here in both the triangle we can see that side AB and AC both are equal. It is given to us. What is the next condition? Angle. Okay, AD is common. AD is equals to AD. It is a common arm of a triangle. And next ADB is equals to angle ADC. The measure of these two angles is equals to 90 degree because AD is an altitude. Fine. So from here we got one side, one angle and another side. So let's see SAS is possible or not. This is the side that we have taken equal. This is the common side. So here in between these two arms we are not getting an angle. तो हम नहीं बोल सकते that these two triangles are congruent by SAS. After that we have one more condition that here we are getting a right angle triangle. यहाँ पे हमारे पास एक right angle triangle है. It means RHS is also possible. So for RHS हमें क्या चाहिए? Right angle चाहिए. Here we are given with an right angle. Hypotenuse must be equal. So hypotenuse is nothing but the side opposite to the this 90 degree. इसके opposite जो side है इधर और इसके opposite जो side है इधर, दोनों equal है. Okay, and next is one side. Any one side means either base or else perpendicular. So in this case this side is equal. So we can say that triangle ABD is congruent to triangle ACD by RHS congruency rule. After that we have to prove that BD and CD both are equal, that is this AD is bisecting line BC. So let's check out whether these are the corresponding paths or not. So BD, this is the side. See,
टू साइड्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल लिख दिए हैं. वी आर लेफ्ट ओनली विद वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, सो डायरेक्टली वी कैन से दैट यस दीज आर दी corresponding parts of the congruent triangle. So these two sides are equal. फर्स्ट बिट प्रूफ कर दिया. सेकेंड बिट में प्रूफ करना था हमें AD bisects angle A. This line AD is bisecting angle A, means it is dividing the angle A into equal parts. We have to prove this. So let's check out whether these angles are the corresponding parts or not. So the angle formed between double marked line and this common arm, and here also the angle formed between double marked arm and this common arm, it means both are the corresponding angles. Directly we can say that angle BAD is equals to angle CAD, corresponding parts of the congruent triangles. Is it clear, Aryan? Okay, coming to question number 3. Here we are given with two triangles ABC and PQR, and both are the isosceles triangles. This is your triangle ABC, and we are given with one more triangle. It is named as PQR. It is given that both the triangles are the isosceles triangle. Two sides AB and BC and median AM. Just remember here one more term is used, that is your median. What is median? Median क्या होता है? मिडल. मीडियन होता है, ट्रायंगल का मीडियन क्या है? Median is nothing that if we draw a line, see this is not a perpendicular line. First of all, if we draw a line from the midpoint of any side to its opposite vertex, किसी साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स पे जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ योर मीडियन. बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट दिस इज़ अ परपेंडिकुलर लाइन. ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई परपेंडिकुलर लाइन ही होगा. So AM is the median. It means from here we can say that BM is equals to CM. It means this is bisecting the side BC. BC को क्या कर रहा है? ये bisect कर रहा है, दो equal parts में divide कर रहा है. So here in the question it is given that two sides AB, BC and the median AM of one triangle ABC are respectively equals to side PQ. It means AB is equals to PQ and QRBC, this side is equals to QR, and median PN, AM is equals to PN. These two the length of these two medians are also equal. In this case also this point N is bisecting this line QR. So from here QN is equals to RN. अभी हमें प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट बिट में ट्रायंगल ABM is congruent to triangle PQN. ट्रायंगल ABNM और PQMN कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है. फॉर दैट लेट्स कंसीडर बोथ द ट्रायंगल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल AB is equals to PQ. It is given to us. In next case this side, this median is equal, AM is equals to PN, this is also given. And in the last thing you see BC and QR both are equal. This is given to us in the question. हमें ये दिया हुआ है BC और QR इक्वल है, बट BC इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रायंगल ABM और PQN. BC आपका इस छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट नहीं है.
So just multiply by half on both sides. Half of BC is equals to half of QR. Can we write half of BC as BM? Half of BC को BM लिख सकते हैं. In the same way, can half of QR can be written as QN, and these are the sides of the triangle ABM and PQN. So from here we can say that triangle ABM is congruent to triangle PQN. ये तो आपका फर्स्ट बिट प्रूव हो गया. In the second bit we have to prove that triangle ABC and triangle PQR both are congruent. सेकेंड बिट में ये प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं. फॉर दैट सी वी हैव साइड AB इज इक्वल्स टू PQ. यहाँ पर AB और PQ दोनों इक्वल हैं, ये गिवन है हमें. अदर देन दिस BC and QR both are equal. This is also given to us. And one more condition, एक और क्या इक्वल हो सकता है, which angle? Yes, in this case, yes, in this case we can't say this as M and N because we are not considering this part. Here we are talking about the triangle ABC and PQR, so you have to name the angles as angle ABC and angle PQR, or else simply you can say angle B and angle Q. Angle B and angle Q both are equal. Why? Because just now we have proved these two triangles ABM and PQN, these are congruent. So the angle between double marked line and this unmarked line is your angle B, and here also the angle formed between this double marked arm and unmarked arm is your angle Q. Here we can say that angle B is equals to angle Q, and these are the corresponding parts of the congruent triangles, and we can use it over here. Angle B is equals to angle Q. We have proved it above. Now see, here we have one side. यहाँ पे अच्छा ऑलरेडी लिखा था proved above. चलो ठीक है. Yes, here we have one side, one angle, and again one side. Let's check out. This is the side, this angle, and this side. It means we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR by side angle side congruency rule. Now both the triangles are congruent. समझ में आया ये आर्यन आपको? Okay, fine. Many people have doubt in question number 4. Okay, look at the question number 4. The question says that BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. We are given with a triangle ABC in which we are given with two altitudes BE and CF. तो BE से अपोजिट साइड पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, एंड CF से अपोजिट साइड पे ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा. दिस इज़ नेम्ड एज BE एंड दिस वन इज CF. ऑल्टीट्यूड्स मीन्स दीज आर द परपेंडिकुलर लाइन्स. नेक्स्ट, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस. आप लोगों ने प्रूफ तो कर लिया होगा, बट छोटी सी चीज़ आपने मिस की होगी, बिकॉज ऑफ दैट यू डिडंट गेट द आंसर. उसकी वजह से आपको लगा कि प्रूफ नहीं हुआ. देखते हैं.
आफ्टर द सोल्यूशन मेनी ऑफ यू विल से दैट हमने ऐसे ही किया था। देखते हैं, हमें प्रूव करना है दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखते हैं, so to prove that ABC is an isosceles triangle somehow we have to prove its two sides are equal। हमें कैसे ना कैसे करके ये प्रूव करना होगा कि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। तो हम देखिए, हमारे पास एक तो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ABE, and one more thing, just look over the statement. It is given that BE and CF are two equal altitudes. It means it is given to us that these two altitudes are equal, that is BE is equals to CF। ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें बोला है कि देखो, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, BEA and CFA। वी कैन कंसीडर दीज टू ट्रायंगल्स। तो अगर ये कंसीडर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास साइड्स AC और AB में भी बाई CPCT इक्वल हो जाएंगे। बट देखते हैं ओरली एक बार, क्या BEA और CFA इक्वल हो पाएंगे। BE और CF एक कंडीशन मिल जाएगा हमें, इट इज़ गिवन टू अस एंगल AEA इज कॉमन एंड अदर देन दिस वी हैव 190 डिग्री, है ना, ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है। हमने क्या क्या बोला थोड़ा ध्यान से देखना। एंगल A हमने कॉमन बोला, F and E we said these are the right angles and we said BE is equals to CF। तीन conditions तो मिल गए। According to this we are getting two angles and one side, but हमें तो यहाँ clearly question में ही दिया हुआ है, we have to prove it by using RHS congruency rule। So is it possible? Is it possible from here that these two triangles are congruent by RHS congruency rule? And next thing is, यहाँ पे सीरीज भी आपकी नहीं बनेगी। चलिए ठीक है, तो दूसरा ट्रायंगल देखते हैं यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट ट्रायंगल इज ट्रायंगल BCF एंड ट्रायंगल BCE। दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। सो इन ट्रायंगल BCF and triangle BCE, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या इक्वल है। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप BE is equals to CF, this is given to us। yes, BC is the common arm, and one more, yes, it is a right angle triangle, so angle BEC is equals to angle BFC, both are equals to 90 degree। now we have two sides and one angle, so for RHS we need one right angle, yes we have one right angle। after that hypotenuse must be equal। in this triangle BCF, this is your 90 degree, so the side opposite to this angle is your BC, and in triangle BCE this is your 90 degree, so side opposite to this is your side BC again, and both the sides are equal because this is a common arm। ये common arm है इसलिए दोनों equal है, hypotenuse भी equal है। after that S means any one side, and yes we have one side equal, it means we can say that triangle BCF is congruent to triangle BCE by RHS congruency rule। बोल सकते हैं ऐसा, both the triangles are congruent, but we don't have to prove that these triangles are congruent, we have to prove that this side BE and CF both we have to prove that this is an isosceles triangle। for that we have to prove either any of the two sides of these triangles are equal। so यहाँ पर AB
So we have to prove that this is an isosceles triangle, that ABC is an isosceles triangle. For that we have to prove any two sides of this triangle is equal. So here if suppose we prove that AB and AC both are equal, for that these are not the part of the triangles that we have considered. इन ट्रायंगल के तो पार्ट ही नहीं है, तो कैसे करेंगे इक्वल? तभी तो नहीं आया ना. क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया. आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की दो प्रॉपर्टी, और एल्स यू कैन से वी हैव प्रूव two theorems. You have to make use of that. Now any guess, any idea? Yes, opposite angles की opposite sides find, but here we don't have angles on, here we don't have equal angles. कहाँ पर है equal angles? Which one? Which one? Yes, exactly, this is the point. This is, yes, this is the point which you have to do. Like here angle B and angle C, the angle B of triangle BCF and angle C of triangle BCE both will be, we can say that both the angles are equal because these are the corresponding parts of the congruent triangles. तो B और C इक्वल हो गए, तो उसके बाद हम अपनी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. So side opposite to angle B is your side AC and side opposite to angle C is your side AB. From here we can say that AC is equals to AB. Sides opposite to equal angles. From here you can say that triangle ABC is an isosceles triangle. क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये समझ में आ गया? व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 5? हो जाएगा? ओके, चलिए ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे. अच्छा, 5th वाला बता दो. चलो ठीक है, देख लो 5th पे. क्वेश्चन नंबर 5, ABC is an isosceles triangle. ABC आपका एक isosceles triangle है in which AB is equals to AC. This is given. Draw AP perpendicular to BC. You have to draw a line AP which is perpendicular to the side BC. ये क्या है? BC पर perpendicular है. To show that angle B and angle C both are equal, and you have to prove that B and C are equal. बताओ अब कैसे होगा जिन लोगों ने किया होगा. एक तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो दैट AB इज इक्वल्स टू AC. डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करोगे, AB और AC इक्वल है, सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. फ्रॉम AB के अपोजिट एंगल C and AC के opposite angle B. From here you can say that these two are equal, but here you are asked to draw a perpendicular to prove that these angles are equal. तो इसका use आप कैसे करोगे? Let's check out. We will consider two triangles in triangle ABP and triangle ACP. AB is equals to AC. This is given. Then APB is equals to angle APC. Both are equals to 90 degree, and AP is a common arm. Here both the triangles are congruent by RHS.
you can say that angle B is equals to angle C because these are the corresponding parts of the congruent triangles. मुझे एक डिस्कस करना था. I'll ask you one question. If suppose that you are given with the question that if two isosceles triangles have a common base, here I am talking about two isosceles triangles having a common base. दो ऐसे isosceles triangles जिनका base कैसा है, common है. You have to prove that line joining their vertices bisects them at right angle. कैसे होगा? If two isosceles triangles have a common base, दो isosceles triangle हैं जिनका बेस कॉमन है. इट मीन्स यू डोंट हैव टू ड्रॉ टू डिफरेंट ट्रायंगल्स. एक ही ट्रायंगल है जिसमें एक कॉमन बेस है. सो वी कैन ड्रॉ इट इन टू वेज. मैं एक टाइम के लिए डायग्राम बना रही हूँ. फॉर अ मोमेंट सपोज दैट दिस इज अ ट्रायंगल ABC एंड दिस इज अ ट्रायंगल DBC. दोनों का बेस कैसा है, कॉमन बनाया है मैंने और बोला है दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो मैं बोल देती हूँ AB एंड AC इक्वल है और DB एंड DC इक्वल है. दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ही बन गए. इसका दूसरा फिगर भी पॉसिबल है. दिस इज ट्रायंगल ABC and two isosceles triangle having common base. It means I can draw another triangle in this way as here both the triangles have common base. We can say that this is an isosceles triangle and here these two sides are equal, so this is also an isosceles triangle. In both the figures you can check out that this is satisfying the conditions which is given in the statement that two isosceles triangle having common base. दो isosceles triangle है जिसमें base क्या है, common है. You have to prove that line joining their vertices, उनकी vertex को जो line join कर रही है, it means इसका vertex ये है, इसका vertex ये है. Line joining their vertices bisects them at right angle. bisects them मतलब ये जो साइड है. For a moment suppose this is P. bisects them at right angle. ये क्या कर रही है, right angle पे इसको bisect कर रही है. And if I talk about this figure, then the line joining their vertices, this bisects them at their right angle. इसके बेस को क्या कर रही है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रही है. आपको प्रूफ करना है BP और CP इक्वल है. ये आपको प्रूफ करना है. ये अब आपका टास्क है इसको प्रूफ करने का. एंड वन मोर थिंग, दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू वन ऑफ योर NCERT क्वेश्चन, दैट टू ऑफ एक्सरसाइज 7.3. both the questions are exactly same. Now it's your task to find out this is similar to which question. Not only similar, this is exactly the same question, just I have changed the statement. Which one? No. Now it's your figure same है, that is a different thing, but you have to check out this statement is matching with the which question and you have to solve out.